भोपाल में आयोजित इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जलसे में ईरान सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि की मौजूदगी में एकता, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं कुछ छोटे बच्चे फिलिस्तीन झंडे छपी हुई टी शर्ट में नजर आए, जिसकी दूसरी तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर राजधानी भोपाल के कोई फिजा इलाके में इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, आपसी भाईचारा और सौहार्द को मजबूत करना रहा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण ईरान से आए सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही रहे। उनकी भोपाल पहुंच से ही कार्यक्रम में उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि वे आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहें और समाज को मजबूत बनाएं। सरजमीन भोपाल पर हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे, जिससे देशभक्ति और एकता का संदेश साफ नजर आया। वहीं कुछ छोटे बच्चे फिलिस्तीन से जुड़े प्रिंट वाली टी शर्ट में दिखाई दिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। जलसे में सिर्फ सामाजिक एकता ही नहीं, बल्कि ईरान और फिलिस्तीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि दुनिया में जहां भी अन्याय हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है और इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि समाज में आपसी मतभेद खत्म कर सिर्फ उम्मत की सोच को मजबूत करने का संदेश देना चाहिए। उन्होंने अमेरिका इजराइल की हरकत नापाक बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का भारत से पुराना दोस्ती का रिश्ता है। खामेनेई ने 250 किताबें लिखी, जिसमें 2 किताब तो भारत पर लिखी। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी जमकर तारीफ की। Yes, Iran is a very rich country, and Iran has more than 5,000 civilization, and also has very good people and factories and everything. But unfortunately, since 47 years ago, some other countries legislated a lot of sanctions, economic sanctions against Iran, and they ordered other countries not dealing with Iran, and also they prevented Iran for selling the petrol and oils. Due to the sanctions, we got some economic problems, but we were managing and we got good economic, but somehow is not as much as we want because of the sanctions against Iran and unlawful sanction and unjust sanction against Iran, and some people in Iran are suffering due to these sanctions. तो पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए एक पहल की गई थी, पाकिस्तान में बैठक भी हुई थी, आपकी तरफ से भी एक प्रतिनिधि गए थे, अफ्रीका से भी आए थे, तो कहाँ जाकर ये फेल साबित हुई है, क्यों सक्सेस नहीं हो पाई? ट्रांसलेट करने देते उस ट्रांसलेट कर दीजिए। Do you know, we didn't want this war, we didn't initiate this war, we didn't start this war. Always we wanted peace in the region. Even before initiating of this war, our supreme leader said to them and warned them, if you initiate this war, is not this war just only between Iran and United States of America and Israel, but other people, other countries also will be suffered by this war. He warned them. And we started negotiating with them. First we negotiated in Oman, then they said it was successful negotiation. They moved to Geneva and they started negotiating. They were in Geneva, it was Friday, they were talking, and even one member of the delegation was from UK, and after that he mentioned that this negotiation was very successful, and even he was surprised. He said, I'm surprised how Iran generosity gives a lot of things to
the United States because we wanted to avoid from the war, but they left the table of negotiation and they attacked and they targeted Iran. They were thinking that within 3 days they can collapse Iran, government of Iran. Within 3 days they can change everything. If you go back to that time, you will see that the President of the United States of America, he said, after war, the map of Iran will be different and will be changed. They wanted to divide Iran to 5 countries. ईरान में ईरान भारत का मित्र रहा है। एक मिनट आसिफ भाई ट्रांसलेट कर। Sir, I want to ask about the situation which is going on, the war situation between the Israel and the Iran. What's your opinion about that? Yes, I think this war is not between Iran and United States of America, and is not war between Iran and Israel as a country, as a regime. This war is a private war, and the one who benefit from this war is Benjamin Netanyahu and also maybe President Trump. They initiated this war against Iran. Otherwise, there is no any single benefit from this war for United States of America. Even for Israel, they will not benefit from this. It's not their interest. But they were in some circumstances, some conditions, and for forgetting those conditions and circumstances, they were forced to initiate this war, and they were thinking within 3 days they can have a lot of achievements. But really, none of Americans benefit from this war. If you want to know that, you have to go to the statement of a lot of American senators, which they condemn this war. You go to the statement of the mayor of New York, is originally also Indian. Sir, but why this second conversation is held in Islamabad? What is the reason behind it? Actually, Iran never asked any country to come to be a mediator for between Iran and United States of America. But some countries, they came and they started talking between Iran and United States of America. Then United States of America for ceasefire offered 15 points plan. Iran didn't accept it. Iran refused it. But Iran said, I'm going to offer to you my proposal. And Iran offered 10 points plan, and it was accepted by United States of America. And they're supposed to discuss based on these 10-point plans. But when they came and they gathered, they started talking, they started asking and demanding something more, and high demand really is not ordinary demand. They started asking and demanding and requesting something else. So the discussion was failed and they went back to their countries. So we can assume that you are इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इससे सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी समझ का मजबूत संदेश सामने आया। इसी तरह की और देश विदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे न्यूज़ 69 चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।